Hello comrades, this is Nyatum Doke back with the second part of the video of APPSC pattern and syllabus. So in this video, I'll discuss the pattern of mains and then the syllabus of mains examination. This video may be little bit long, but a serious aspirant should definitely watch this video till the end, and he or she should memorize the entire syllabus. The syllabus should be on the tip of the tongue. First of all, I would like to tell that there is no difference between preparation for prelims and mains. How, that we will be discussing in some another video, but I would suggest that you should memorize the entire syllabus. You print out the syllabus and paste it on the wall. You look at it again and again. It will help you, because most of the time what happens in mains, you look at the paper of the mains of UPSC examination, take it out and then tally it with the syllabus. At least 80 to 90% of the questions are directly from the syllabus. So it is very important you know the syllabus, and if you know the syllabus, then you will be able to relate it while you are reading newspapers or any other materials or books. Instantly you will know that okay, this topic is in the syllabus in that paper. That is very important. After this video, in the next part, we will discuss the materials which are important, and then we will also be discussing the sources, different sources, and the approaches to complete this vast ocean of UPSC syllabus, which looks unfathomable, but trust me, it is doable. It can be fathomed. And for interested aspirants, I would be coming up with a course on topics related to Arunachal Pradesh, geography, history, and then polity. I'll try to comprehensively cover all the topics. Those interested may contact me in my number, which is given in the description already. And then I have a Telegram channel where we upload questions related to Arunachal and other happenings in our country and international happenings also. So here it is. First we have a general English paper, and then we have one essay paper, and then we have general studies paper, and then optional paper. The general English paper is of 300 marks, and then it is qualifying in nature. That means the marks you obtain in general English paper will not be counted while the rank is being prepared. And then there is one essay paper. In that essay paper there will be part 1, part 2. You have to write 2 essay of 125 mark each. And then जनरल स्टडीज़ पेपर में 4 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4. ईच पेपर विल बी ऑफ 250 मार्क्स का होगा, तो 1000 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है. एंड देन देयर विल बी वन ऑप्शनल पेपर. तो एक ऑप्शनल होगा, जो भी आप अपना सब्जेक्ट एक सेलेक्ट करके यू हैव टू राइट. ठीक है, एक ऑप्शनल के अंदर में 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, जो कि 250 मार्क्स ईच होगा. ठीक है, तो दिस इज देयर. तो लेट्स लुक एट द सिलेबस. तो फर्स्ट पेपर आपका ऐसे पेपर. ठीक है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द इंग्लिश पेपर बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड देन जनरल इंग्लिश में जो आता है वो सभी आता है. तो दिस इज़ द ऐसे पेपर. तो ऐसे पेपर में इट इज़ रिटन दैट कैंडिडेट में रिक्वायर्ड टू राइट ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. ठीक है, यू विल हैव टू राइट ऑन 2 टॉपिक्स, एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. तो concisely लिखना है, exact expression करना है, effective expression करना है, then only you will get marks. Okay, so usually we conduct class for essay, so you may join my classes sometimes if you need to improve your essays. And then the syllabus of the essay is as per the new amendments in APPSC syllabus. There will be part 1 and then there will be part 2. The part 1 will have 3 or 4 topics, 3 or 4 essays will be given, and you have to write 1 essay. तो उसमें क्या होगा, issues related to national and international level events and abstract topics. ठीक है, तो abstract topic मतलब quotation base वाला, anything can be asked abstract. ठीक है, quotation, किसी का saying वगैरह. ठीक है, तो ये सब question can be asked essay. And then part 2 में क्या होगा, essays on issues related to Arunachal Pradesh, which will include social, cultural, developmental and current burning topics. तो इन सब का ऊपर में होगा. ठीक है, ऐसे. And then in the part 2 also you will be given 3 or 4 topics from which you have to choose one and then you have to write, attempt. तो 125 मार्क ईच का होगा.
तो बेसिकली 250 मार्क्स का ऐसे पेपर होगा, ठीक है। एंड देन GS1, तो GS1 का सिलेबस में क्या होगा, बेसिकली इट इज़ इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो syllabus of APPSC is a mirror image of UPSC syllabus. However, there have been some amendments. So after the amendments, Arunachal topics have been added. So we'll discuss those things also. So syllabus looks very vast, but if you do it properly, if you categorize it properly, it will not be that vast. You will be able to complete it within the time, ठीक है। तो we will do that in the third video ना। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक, क्या है देखिए, इंडियन कल्चर विल कवर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, क्या क्या आर्ट होता है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वट एवर एवोल्यूशन और डेवलपमेंट have happened will be it will be aspects will be asked from ancient to modern times, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, तो जो भी डेवलपमेंट हुआ है। एंड देन जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो यूजुअली 1857 रिवोल्यूशन का बात होता है ना। एंड देन अभी तक प्रेजेंट डे तक, ठीक है, अंटिल प्रेजेंट। एंड देन सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ वगैरह इश्यूज़ के ऊपर में देयर कैन बी ए क्वेश्चन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला ना। एंड देन बट वी शुड नॉट रीड जस्ट आफ्टर 1857, उससे पहले का भी पढ़ना है, बेथल प्लासी वगैरह, ओके। तो ये सब भी पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज दिस थिंग्स आर ऑल्सो आस्क्ड समटाइम्स ना इन द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल को देखना है, ठीक है, स्टेजेस को, वेरियस स्टेजेस, एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि इसमें नोटिस वगैरह भी आ जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, ठीक है। एंड देन कंट्रीब्यूटर्स का भी देखना है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, तो ऊपर में भी है, तो ये चीज़ है। उसका बाद देन यू हैव टू डू पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है, जो कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री हुआ है उसका बारे में भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है जी सर आपका ये जो 4 अभी तक हम लोग देखे, दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ना, हिस्ट्री है, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड देन कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी या पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। उसका बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके वर्ल्ड वार्स, नेशनल बाउंड्रीज का कैसे विड्रॉल हुआ, एंड देन कॉलोनाइजेशन, डिकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। तो इसका बाद ये बेसिकली दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्री, तो यू हैव टू रीड अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड ऑल ऑल्सो, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस थिंग्स। उसका बाद सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, the problem and the remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, next social empowerment, communalism, regionalism and secularism. तो these are part of the basically सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, या सोशियोलॉजी का, इंडियन सोशियोलॉजी का पार्ट है। सैलेंट फीचर ऑफ, इसका बाद जैसे जोग्राफी आ गया, फिर सैलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी, distribution of key natural resources across the world including South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for location of primary, secondary and tertiary industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena जैसे कि earthquake, tsunami, volcanic activities, cyclones etc. and then geographical features, their location, changes in critical geographical features including water bodies, ice caps and in flora and fauna and effects of such changes. So this is basically the syllabus of GS1 and then in addition अरुणाचल का टॉपिक्स कुछ आ गया है। तो this box contain the topics of Arunachal Pradesh as amended by the APPSC. तो topography, riverine system of Arunachal, transport, communication system, natural hazard of northeast region including Arunachal, land, people, history, cultural tradition, village institutions including chieftaincy system in Arunachal Pradesh, natural resources including mines, minerals, water resources, forest, wildlife of Arunachal Pradesh, location, physiography, climate, biodiversity of Arunachal Pradesh,
trade, commerce, economy of Arunachal Pradesh, social and developmental issues of Arunachal Pradesh, Make Mohan Line, administrative evolution of Arunachal Pradesh, BEFR Bengal Eastern Frontier Regulation 1873, Inner Line Permit, Assam Frontier Regulation 1945, administration आपका असम फ्रंटियर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1954 का, एंड देन नेफा रेगुलेशन 1965, उसका बाद दाइंग एरिंग रिपोर्ट 1965, नेपाल पंचायती राज रेगुलेशन 1967, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997, ठीक है। तो 1997, तो देखिए सिलेबस हैज़ बिकम वेरी वास्ट, पेपर 1 स्पेशली ना। So you can expect that 50% of the question, maybe 30 to 50% of the question may be from Arunachal Pradesh, ठीक है। और this is paper 1, and then GS paper 2. So GS paper 2, governance, constitution, polity, social justice and international relation. I am hoping that some of the questions from Arunachal may also pop in within this GS2 paper, like Panchayati Raj वगैरह, ठीक है। Those can come in GS2 also. So basically here what happens, it deals with polity basically, the Indian constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure, functions and responsibilities of the union and the state, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power and finance just up to the level and challenges therein, separation of power between various organs and disputed resolution mechanism and institution, comparison of Indian constitutional scheme with other countries. So this is world constitution, and then parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, power and privileges, issues arising out of this structure, organization, functioning of executive and judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal and informal association and their roles in polity, salient feature of representation of people act. So this time election, this is the election year, so it is important. Appointment of various constitutional posts, power, functions and responsibilities, ठीक है, constitutional post का, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies, उसका बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड देन व्हाट आर द इश्यूज out of their design and implementation, and then developmental processes and the development industries, role of NGO, SSGs, various groups and association, donors, charities, institutions and stakeholders, उसका बाद welfare schemes जो है उसका बारे में by central and state and the performance of these schemes, तो schemes वगैरह के बारे में देखना है, ठीक है। and then institution and bodies constituted for protection of and betterment of the vulnerable sections, तो उसका बारे में, issues relating to development and management of social sector services relating to health, education and human resource, issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance जैसे कि ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस, ठीक है, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड आपका इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। इसका बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जो ग्रुपिंग होता है जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, एंड देन योर बीमस्टेक हो गया, ये सब चीज़ ना। उसका बाद SCO हो गया, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, जो इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट करे वही, effect on the policies and politics of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora, important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. So why I am reading it line by line, because it is very important to know each and every word in the syllabus, क्योंकि क्वेश्चंस को आप उठा के देखो यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सिलेबस ओनली, ठीक है। तो सिलेबस से उठा के पूछ लिया, जैसे कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज सिटीजन चार्टर, ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस इन सिटीजन चार्टर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो यू हैव टू नो द सिलेबस। उसका बाद पेपर 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो बहुत बड़ा सिलेबस है।
तो बेसिकली फर्स्ट क्या, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, growth development and employment, inclusive growth and issues arising from it, गवर्नमेंट बजट्स, टाइप्स ऑफ बजट होता है। इसके बाद इसमें फिर एक ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इश्यूज रिलेटेड टू agriculture and its constraints, e-technology in aids of farmer, issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support price, public distribution system, objective functioning, limitation, revamping, issues of buffer stock and food security, technology mission, economics of animal rearing, food processing and related industries in India, scope and significance, location, upstream, downstream requirement, supply chain management, land reforms in India, effect of liberalization on economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth, infrastructure, energy, port, roads, airport, railways, etc., investment models, science and technology, development, ये science and technology अभी यहाँ से शुरू हो गए, developments and their applications and effects in everyday life, achievements of Indians in science and technology, Indianization of technology and developing new technology, awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues relating to the intellectual property rights, conservation, environmental pollution and degradation, and then environmental impact assessment, जैसे environment शुरू हो गया। उसके बाद this is disaster and disaster management, linkages between development and spread of extremism, role of external states, ठीक है। तो ये आप यहाँ से फिर security शुरू हो गया, role of external and non-state actor in creating challenges to internal security, challenges to internal security through communication network, role of media and social networking side in international security, challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention, then security challenges and their management in the border areas, linkage of organized crime with terrorism, various security forces and agencies and their mandate. So this is paper 3 of GS and this is paper 4 of GS, ethics, integrity and aptitude. So this paper will include question to test candidates' attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflict faced by him in dealing with the society. Okay? Question may utilize the case study approach to determine these aspects. तो इसमें क्या होगा, केस स्टडी आता है, ठीक है, कोटेशंस वगैरह आता है, उसके बाद केस स्टडी का आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो ऐसा करके आता है ना। तो बेसिकली टॉपिक क्या क्या होगा, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके बाद एसेंस, डिटर्मिनेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन वैल्यूज, lessons from the lives and teaching of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institution in including values, inculcating values, तो values लाने में क्या वो है, रोल है। इसके बाद एटीट्यूड का ऊपर में एक सिलेबस है पूरा, एटीट्यूड का कंटेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या होता है एटीट्यूड का थॉट एंड बिहेवियर में, ठीक है, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, व्हाट इज परसुएशन, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज क्या क्या है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड देन नॉन पार्टिsanship, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कॉम्पैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो ये सब हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस का ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके बाद पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, ethical concerns and dilemma in government and private institutions, laws, rules, regulation and conscience as a source of ethical guidance का source, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding, corporate governance, probity in governance, concept of public services, philosophical basis of governance,
governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of services, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो सब कुछ इसमें आ जाएगा एथिकल एंगल से। एंड देन ये सब का ऊपर में देयर विल बी केस स्टडीज ऑन द एबव इश्यूज। ठीक है, केस स्टडी होगा तो ये चीज़ें। इसका बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना अपना यहाँ में देख लीजिए, देयर आर 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो हम लोग का जो लैंग्वेज है, तो बाहर का लोग बहुत मैसेज करते हैं कि सर ये ले सकते हैं, नहीं वो ले सकते हैं। तो लिटरेचर में जो है यू कैन ओनली ऑप्ट फॉर इधर इंग्लिश और हिंदी, अदर देन दैट लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं। तो क्या क्या हम लोग का एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। ठीक है, तो ये सब में से आपको यू हैव टू चूज़ वन, एक आपको देना है, चूज़ करना है, एक चूज़ करके दैट विल बी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो एक का अंदर में देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, जैसे कि पोल साइंस का अंदर एक पेपर होता है थ्योरी वाला, पेपर 1, एंड देन दूसरा पेपर होता है आईआर वाला, इंटरनेशनल रिलेशन वाला ना। तो दिस इज़ द थिंग। सिलेबस लुक्स वास्ट, but it is important that you read the syllabus again and again, and then the syllabus is in the tip, on the tip of your tongue। ठीक है, तो चलो, गुड डे।